Ballers, welcome to Desi Ballers. I'm Nikhil with my co-host Gopal. Hey Gopal. Hello. So we have a really exciting show for you today. Gopal, before you introduce your guest for the NBA, the playoff picture is shaping up really well. There's a lot of interesting things going on with the Warriors, Lakers, and Clippers to see who gets the 5, 6, and 7 seed, who ends up in the playing tournament. But Gopal, who's the guest you have for us today? We have a super exciting guest. He's one of those rare Indian pro athletes who has played in multiple countries like Thailand, Egypt, and in India, right? Abhyuday Yadav, who's a 6'2", like a combo guard who plays forward and guard position, right? And he's super physical, super strong. He's from Aligarh, UP, who has been in Delhi for the last few years, and right now he's playing professionally with the Goa Waves in the Elite Pro Basketball League, and he's also been part of the team in 3BL, the 3x3 Pro Basketball League with Ahmedabad Wingers. So, and how he came to my attention, hi Abhyuday. I'll tell Abhyuday Hello. how he came to my attention. Okay, this is an amazing story which Nikhil does not know. Okay, for the in the 3BL, in the first game that they played, okay, in the 3x3 tournament, it was Ahmedabad Wingers, I think, versus a with a team from Chennai. Chennai. Chennai, Chennai. he knows. Abhyuday knows the story. Yeah. Okay, they were down one player. Okay, so in a 3x3 game, it was just Abhyuday and Vishesh Brigwanshi, who's like the captain of the Indian basketball team. It was 2 versus 3. Okay, and these guys beat that team, right, with one man down. So Wow. Wow. Okay. major, I'm like, whoa man, what is this happening? And they just kept driving in throughout. Okay, pure physical basketball, like no 3-pointer. They just kept driving in, and that's how he came to my attention. So I'm really glad Abhyuday could join us. Hi Abhyuday, kaise ho? Sab badhiya? Hello, Bia. All good. How are you? Okay. Abhyuday, thank you so much for joining us here. So, Yeah. first things first, I mean, I must say you have a build like, Luke Dot, look like a Yeah. very physical dominating presence. Like Yeah. is power an important part of your game before any other Yeah. question? Yeah. It is like I like to play and like drag the defender to the like near to the ring and then finish the ball closer to the rim. Yeah, you get a lot of N1s with this with this technique. And in the game of 3x3 also, आपको physical होना पड़ता है. It's a very physical sport. Hmm. So So we'll power is an add-on advantage अगर आप उसको use ha कर सकते हैं तो. We'll ask ha you more details about your game, but let's start with the important questions. Go ahead, Gopal. ha. So Abhyuday, so a lot of us, like even I thought you were a Delhi guy. ठीक है, Okay. but I know you're not from Delhi. So can you just take us through your childhood? I believe you are right now also in Aligarh. तो Yeah. अलीगढ़ में क्या मतलब हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आपका बचपन कैसा रहा? आपने बास्केटबॉल कब और कहाँ और कैसे खेलना शुरू किया? कैन यू जस्ट टेक अस थ्रू योर चाइल्डहुड? या लाइक मैं अलीगढ़ में हूँ बचपन से तो यहाँ एक स्कूल है सेंट फिडल्स जहाँ से मेरी मतलब स्कूलिंग हुई इनिशियल 10th क्लास तक तो वहाँ पे मेरे घर के पास उसकी एक ब्रांच है जो जूनियर विंग है लाइक वो 5th तक है उसके बाद जो सीनियर विंग है वो काफी दूर है यहाँ से तो हाँ, इन 2008 जब मैं 8th क्लास में था तो उस टाइम पे जूनियर विंग के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया इन लोगों ने स्कूल वालों ने तो वो घर के बहुत ही पास था मेरे तो मैंने ऐसे ही बस चप्पल पहन के चला जाता था मैं ऐसे ही खेलने खेलने थोड़ा बहुत ऐसे ही अच्छा. तो धीरे धीरे गेम अच्छा लगने लगा मेरे को तो मैंने फिर वहां से कंटिन्यू किया एंड 10th के बाद मैं काफी मतलब ये था कि सीखने लगा बास्केटबॉल खेलना आफ्टर 10th तो फिर मैंने उसे कंटिन्यू किया एंड उसके बाद तो लाइक मैंने ग्रेजुएशन अपनी एएमयू से की तो मैं 11th क्लास में ही मैंने यूनिवर्सिटी टीम ज्वाइन कर ली थी एएमयू की क्योंकि मैंने स्कूलिंग अपनी 11th 12th एएमयू से करी थी उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने में जामिया से आया फिर जामिया से मैंने 3 बार ऑल इंडिया खेला जिसमें हम लोगों का 2 बार ब्रॉन्ज मेडल था ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में दैट्स सुपर. इंप्रेसिव. सो बास्केटबॉल के अलावा और कोई स्पोर्ट आपने ट्राई किया था या बस बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से मिल गई थी इसीलिए यू जस्ट स्टार्टेड रोलिंग विद बास्केटबॉल? नो उससे पहले क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला था मैंने स्कूल में मतलब 4th 5th 6th क्लास तक जो सब खेलते हैं तो मतलब क्रिकेट तो इंडिया में हर कोई खेलता है वो वाली चीज है तो उसी तरीके से लेकिन अगर कोई स्पोर्ट मैंने ढंग से पिकअप किया उसके बाद कि हाँ मुझे इसमें खेलना है कुछ तो बास्केटबॉल ही था ओके. सुपर. लेकिन आपको कैसे मतलब ये आपके फैमिली में से कोई स्पोर्ट्स में है? नहीं कैसे नहीं आपने मेरी डिसाइड किया? हाँ. नहीं मेरी फैमिली से कोई भी स्पोर्ट में नहीं है मैंने खेलना स्टार्ट किया और मेरा छोटा भाई जो है अमोल वो भी खेलता है बास्केटबॉल ही इज ऑल्सो इन जामिया वो लॉ कर रहा है वो भी यूनिवर्सिटी टीम का पार्ट है उसने भी मतलब नेशनल लेवल प्लेयर है वो भी तो बस हम 2 लोग हैं जिन्होंने खेला उससे पहले मेरे मतलब पूरी फैमिली में किसी ने स्पोर्ट्स में कोई नहीं है तो आपके और आपके भाई के बीच में काफी मतलब प्लेग्राउंड बैटल्स होते रहेंगे ना, वन ऑन वन? आप खेलते हो उसके अगेंस्ट? हाँ जीतता कौन बहुत है? जीतता वो कौन है वो कभी मैच? कभी वो कभी मैं बहुत अच्छा खेलता है वो भी
ओके ओके। और अलीगढ़ के बारे में पूछें तो अलीगढ़ में ऑब्वियसली वी ऑल नो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत मशहूर है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। लेकिन अलीगढ़ में क्या बास्केटबॉल की पॉपुलैरिटी कैसे है? इज इट वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट्स या फिर आपको ढूंढना पड़ता है कोर्ट या प्लेयर? नहीं, अलीगढ़ में बास्केटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ, आपको कोर्ट मिल जाता है। आपको मतलब कुछ 5-6 कोर्ट्स हैं जिनका आपको पता है कि यहाँ पे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ग्राउंड है, उसके अलावा स्कूल्स के अंदर कुछ स्कूल्स हैं जिनके अंदर ग्राउंड है, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अलीगढ़ का स्टेडियम जो है, उसके अंदर इतना अच्छा कोर्ट नहीं है, जो मतलब एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ है, जबकि स्टेडियम्स के अंदर मोस्टली कोर्ट अच्छे होते हैं, बट अलीगढ़ स्टेडियम के अंदर जो कोर्ट है, वो अच्छा नहीं है। तो ओह, बस वही था कि मेरा स्कूल में कोर्ट बन गया था, तो मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर आफ्टर 10th में एएमयू में एडमिशन हो गया था, सो आई वेंट देयर। एएमयू के पास कोर्ट था, वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, तो यूनिवर्सिटी की वजह से थोड़ा पिकअप कर गया मैं गेम। मेरा ये था कि मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था, मैं अकेले भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो मैंने अकेले प्रैक्टिस कर करके ज़्यादा गेम सीखा हूँ, बाकी ओह, टीम के साथ प्रैक्टिस करने के अलावा। वेरी इंटरेस्टिंग आपने ये जो बोला। और प्लस आपने ये भी ऐड किया था स्टार्टिंग में कि आपका बहुत फिजिकल स्टाइल ऑफ प्ले है। तो या एज यू स्टार्टेड प्लेइंग, एज यू वर ग्रोइंग अप, किस प्लेयर के जैसे आपने अपना गेम को मॉडल किया, या विच वाज दैट प्लेयर हु स्टाइल यू रियली रेजोनेटेड विद एंड यू ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन योर गेम? इनिशियली मेरा फेवरेट प्लेयर कोबी ब्राइंट ही था। ओके। हाँ, लेकिन अगर आप फिजिकलिटी के लिए पूछोगे मेरे से, तो वो मेरे को शकील ओनील से अच्छा कोई नहीं लगता था। जो वो लो पोस्ट पे जो बंदा जो खेलता था कि अपने डिफेंडर को रुला ड्रैग करके देता था लेके लोगों जाना, को। हाँ, बिल्कुल रुला देता था वो लोगों को। हाँ। तो मुझे वो चीज़ उसकी बहुत ज़्यादा पसंद थी कि आप लो पोस्ट के पास जा रहे हो, आप बॉल मतलब कंट्रोल करके लेके जा रहे हो, आप फाउल एंड काउंट मार रहे हो, वो सारी चीज़ें। क्योंकि आप जब राइट। फाउल एंड काउंट मारते हो, तो सामने वाली टीम को आप एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज दे रहे हो। उनका फाउल भी हो रहा है, आप स्कोर भी कर रहे हो, आपके पास फ्री शॉट्स भी हैं। करेक्ट। तो वो चीज़ थी। तो बट इस वजह आई से मेरे को शकील आई ओनील का गेस गेम बहुत प्रॉब्लम पसंद बस था। यही है कि शैक के जैसा साइज सबको नहीं मिलता हाँ, बिल्कुल, है। बिल्कुल। और अगर वो साइज़ मिलता है तो कोई उतना उस पे लेकिन उतना फिज़िकल होके खेल भी नहीं पाते बहुत लोग। लाइक करेक्ट, बहुत करेक्ट, लोग हैं करेक्ट, जो 7 फीट टॉल होते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल पाते। करेक्ट, करेक्ट। दे आर नॉट फिजिकल लाइक शैक, और अभी जैसे यानिस खेलता है बहुत, या बीट पीपल अप, बुली या बॉल। या या बुली बॉल इज़ अ या तो अभ्युदय, आपकी मतलब ट्रेनिंग कैसे रही? तो आप आपको आई थिंक आपने कहा कि 11th में आप सीरियस हो गए बास्केटबॉल की तरफ, लेकिन आपको कब पता चला कि बास्केटबॉल में आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है बाकी प्लेयर के कंपैरिजन में? आपको ऐसा कुछ टूर्नामेंट था, इवेंट था जब आपको लगा कि मैं इस गेम में बहुत ही अच्छा खेलता हूँ मैं? नहीं, मेरे को ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि मैं जहाँ खेल रहा था, वहाँ पे कोई बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब हाँ, मेरे से हम्म। अच्छे शुरुआत में थे जो मेरे सीनियर्स थे, लेकिन इवेंचुअली मैंने बहुत जल्दी उनको कैच अप कर लिया, उनसे बहुत कम टाइम में। क्योंकि वही चीज़ है कि मैंने आपको बताया, अलीगढ़ में बास्केटबॉल इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब मैं बाहर थोड़ा बहुत स्टेट लेवल वगैरह पे खेलना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं बाकियों से अच्छा खेल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बात वहाँ टैलेंट की नहीं आई, मैंने बस वो था कि मैंने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की थी, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा ग्रोथ मिलती रही। तो मेरे को 12th क्लास में मैंने पहला अपना नेशनल खेला, एंड उसके बाद वो हाँ। मिलता रहा मेरे को खेलने को। जैसे जब एनबीए जैम होता था, तो 2013 में मैंने एनबीए जैम का विनर भी रहा था मैं, 3 ऑन 3 का रामदास कॉलेज में हुआ था, तो मुंबई खेलने गया। तो मेरा पहला चांस था कि मैं इस तरीके से किसी प्राइवेट टूर्नामेंट के लिए बाहर, मतलब थोड़ा फ्लाइट वगैरह में बैठ के जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। उससे पहले, क्योंकि आपको पता है नेशनल लेवल पे हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हाँ। तो वो नहीं, ये बहुत वहाँ से फिर इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही। 2 चीज़ें आपने कही कि आपने सीरियसली खेलना स्टार्ट किया 10th और 11th में, और आपने 12th में नेशनल्स खेला। ये जो टाइम होता है 10th टू 12th स्टडीज़ के लिए होता है यूजुअली, बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं उस टाइम, और आप कह रहे हो कि आपने काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया 10th, 11th, 12th के टाइम पे। तो एज़ अ स्टूडेंट आप कैसे थे? पढ़ाई कैसी थी? नंबर अच्छे हैं आपके? हाँ, मेरे नंबर अच्छे हैं, मेरी 10th में 9.4 सीजीपीए थी। उसके बाद मैंने 11th-12th और ग्रेजुएशन के पहले 2 साल थोड़ा पढ़ाई कम करी थी, उस टाइम मैंने सिर्फ़ बास्केटबॉल खेला है, जो मैं सच है। हाँ, उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से अपना थोड़ा सीरियस हुआ, उसके बाद एमबीए भी मैंने काफ़ी अच्छे से किया, मतलब एमबीए में मतलब अच्छा था, मेरा डिस्टिंक्शन रही एमबीए में भी, तो वो सारी सुपर। चीज़ें अच्छी थी या लेकिन हाँ, बीच में वो मैंने सिर्फ़ बास्केटबॉल पे ध्यान दिया, वो उस टाइम की मेहनत है जो मुझे लगता है कि मेरे को आज भी गेम में आगे चला रही सो आई हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। आपने एमबीए वगैरह की है, यू बिन अ कंसिस्टेंट बास्केटबॉल प्लेयर, एंड यू हैव प्लेड प्रो इन है। टू डिफरेंट लीग्स इन इंडिया। सो आई मीन, हाउज दैट जर्नी लाइक? वो तो प्रो खेलना इंडिया में हर प्लेयर के लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ है। जब 2018 में मेरे को चांस मिला 3BL का पार्ट होने का, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उससे जस्ट पहले लाइक 2017 में अक्टूबर में मेरी एक नी सर्जरी हुई थी, मेनिस्कस टियर था मेरे। तो उसके बाद मैं अपना रिहैब करके बस वापस आया ही आया था गेम में, एंड आई गॉट अ चांस टू प्ले इन 3BL।
एंड मतलब मेरा ये था कि मेरे मतलब आप उसको चाहे मेरी किस्मत का या कुछ भी कहो, मैंने मतलब डिसेंट परफॉर्म किया काफी उसमें। और जो उसके बाद एक वर्ल्ड टूर का कैंप हुआ था, मैं टॉप 10 प्लेयर्स में उसके लिए इंडियन प्लेयर्स में सेलेक्ट होके वर्ल्ड टूर का कैंप भी किया था मैंने। राइट। तो 2018 में तो 3BL एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसने मुझे मतलब जो इनिशियल एक्सपोजर चाहिए होता है एक प्लेयर को प्रो खेलने का, वो हम्म। सारी चीजें दी कि जो चीज इंडिया में मोस्टली प्लेयर्स बास्केटबॉल प्लेयर्स लैक करते हैं। आपको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छा एकोमोडेशन नहीं मिलता, ट्रैवल के लिए अच्छी वो चीजें नहीं मिलती। तो वो सब 3BL ने उस टाइम पे उस गैप को फिल किया। सुपर। तो उसकी सो वजह से काफी अच्छा लगा। एक और चीज बोलिए मेरे को, एज एन एमबीए ग्रेड एज वेल, आई मीन Yeah. द बिजनेस साइड ऑफ इंडियन प्रो प्लेयर्स एंड द बिजनेस साइड ऑफ इंडियन बास्केटबॉल एंड प्रोफेशनल लीग्स, लाइक क्या चल रहा है, क्या स्टेट है, क्या बेहतर हो सकता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू? बिकॉज बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग दिस शोज विद गोपाल, आई हैड नो आइडिया कि इंडिया हैड प्रो बास्केटबॉल लीग्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी के वेयर आर यू माय फ्रेंड। नो, इंडिया के पास मतलब बास्केटबॉल प्लेयर्स बहुत है इंडिया के पास। जो प्रॉब्लम है वो है कि क्वालिटी बास्केटबॉल प्लेयर्स थोड़े कम हैं। अगर हम मतलब क्रिकेट या किसी फुटबॉल से भी कंपेयर करें, तो जो एक सब पार मतलब क्वालिटी रहती है प्लेयर्स की, कि इसको आप ये कह सकते हो कि ही हैज द पोटेंशियल टू टर्न प्रो, उस तरीके के प्लेयर्स बास्केटबॉल में आपको काफी कम मिलेंगे क्वांटिटी वाइज। जो बाकी स्पोर्ट्स में आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे। जैसे अगर आप क्रिकेट को देखोगे, तो क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा कंपटीशन है कि जो नेशनल लेवल की टीम है उसके लिए जो लोग compete कर रहे हैं वो भी आपस में एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है। यहाँ वो ओके। चीज थोड़ी कम है। उसके बाद व्यूअरशिप की बात आती है। इंडिया में बास्केटबॉल की व्यूअरशिप अभी उतनी ज्यादा नहीं हुई है, जिसको अगर विद टाइम हम फोकस करेंगे तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, हम्म। लोग देखते हैं। एंड हम्म। सबसे बड़ी चीज कि लोग पसंद करते हैं उस गेम को, अगर वो ढंग से इन्वॉल्व किया जाए, उनको थोड़ा इंटरेक्शन किया जाए लोगों के साथ, या उसको बताया जाए कि इस गेम में कैसे क्या चीज हो रही है। राइट। तो इट कैन ग्रो, इट मतलब काफी ज्यादा स्कोप है ग्रो करने का। तभी हम ये चीज भी देख रहे हैं कि एनबीए इज ऑल्सो टारगेटिंग इंडिया। एक तो राइट। पॉपुलेशन बेस है ही इंडिया के पास, बट उसके अलावा भी सबको पता है कि बास्केटबॉल को पॉपुलर किया जा सकता है। राइट। So Spoken like a true MBA, no? This is like a proper I, we're talking to an MBA person. तो आपने अभी तक आपने सोचा कि आपको स्पोर्ट्स प्रमोशन में जाना है, या फिर अभी आपको आपका फोकस कंप्लीटली एज अ प्लेयर है अभी? नहीं, मैं स्पोर्ट्स प्रमोशन में भी जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, हाँ, इस टाइम पे तो एज अ प्लेयर मेरे को अपना वो देखना है, क्योंकि अब जब ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें लीग्स खेलने की, लाइक हाँ, अगर आपको जो आप काम करना चाहते हो, आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, उसके लिए आपको पे कर रही है लीग, या फिर जैसे आपको उसके लिए ही पैसा मिल रहा है, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर अब भी हम नहीं करेंगे तो फिर वो तो हमारी खराब बात है। Nikhil, makes sense. ask the question that I know you want to ask, the Yeah, commerce yeah. side. Ask. So obviously, one important question I have is, of course, या say kids are some kids who will be watching this show, और हम इस podcast को छोटे छोटे segments में भी release करते हैं. So ओके। if you had to tell them, one is how much, if you're comfortable sharing, how much are you getting paid by each of these leagues, and second, if they wanna go pro, what are some tips or advice you have for them to actually get to a level where they can go pro? ओके, जो अमाउंट की बात रही तो वो डिफर करता है, लाइक लीग टू लीग डिफर करता है, प्लस प्लेयर टू प्लेयर डिफर करता है। जैसे अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ग्रेड में हो सकता है, किसी मेरे से अच्छे प्लेयर का मेरे से ऊपर के ग्रेड में होगा। तो Okay. जो अमाउंट ऑफ टाइम आप लीग को दे रहे हो अपना, उसके हिसाब से दे पे यू डिसेंट, मतलब वो खराब नहीं है। तो Okay. इफ समवन इज प्लानिंग टू प्ले प्रो इन इंडिया, तो लाइक आपको प्रैक्टिस तो करनी है अपनी सारी, वो सारी चीज तो बिल्कुल कॉमन है। लेकिन विद टाइम आपको अपने आप को शोकेस करना आना चाहिए। अगर आप ट्राईआउट्स में हैं, लाइक एक ट्राईआउट्स में 200 लोग आते हैं ट्रायल देने, अगर Hmm. तो यू हैव टू स्टैंड आउट। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आप उसकी वजह से लोगों की नजर में आओ। मतलब बिना स्टैंड आउट किए आप नहीं आ सकते। तो सारी So जैसे चीजें कि यू हैव क्या, टू स्टैंड जैसे आउट। कि क्या So आपको क्या करना है? I'm हाँ. guessing for Abhyuday it was bully ball. या यू कैन से दैट। जो लाइक मेरे लिए लाइमलाइट वही थी, जो 3-on-2 वाला गेम हम जीते। हाँ. वो मेरे लिए एक वो था, लाइमलाइट वाली सिचुएशन थी कि लोग उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे। लाइक लोगों को पता था कि मैं खेलता हूँ, सब है, सारी चीजें हैं। लेकिन वो 3-on-2 वाला गेम एक लाइक मेरे लिए काफी चेंज लेके आया। उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ, कि इज अ फोर्स, बस वो वाली चीज है। Force. I like that. But Abhyuday, what is your tips? Like अगर कोई जा रहा है ट्राईआउट्स के लिए, या तो what are some, आपको कुछ लग रहा है कि these are some 4 or 5 basic things आपकी हर प्लेयर को करना चाहिए इन अ ट्राईआउट्स? ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, या फिर इट हाँ, कंप्लीटली डिफर्स? नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर्स लाइक यू हैव टू बी वोकल। अगर आप कोर्ट पे हो, आप थोड़ा वोकल होने का ट्राई करो, बिकॉज आपको अटेंशन चाहिए। जो भी सेलेक्टर्स हैं, कोचेस हैं, कोई भी है, सो यू नीड अटेंशन के। ट्राई टू बी वोकल, ट्राई टू गाइड अदर प्लेयर्स के अपना मतलब एक तरीके से डायरेक्शन बताओ उन्हें कि आप अगर डिफेंस कर रहे हो, लाइक यू इफ यू आर प्लेइंग जोन और मैन टू मैन, जस्ट गाइड योर टीममेट्स कि वो किधर क्या कैसे कर सकते हैं, कोई मैन अगर छोड़ रहा है। लाइक यू हैव टू शाउट ऑन दोस थिंग्स, लाइक नॉट शाउट बट या यू हैव टू बी वोकल, कि उनको बताओ आप, लाइक गेम को गाइड करो, गेम अपने हिसाब से चलाओ।
उसके अलावा जो प्ले आप सेट करा रहे हो वो चीज बहुत इजीली नोटिस होती है। इफ यू सबको ये लगता है कि जो शॉट मार रहा है लोग उसको देखते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा सेलेक्टर है तो वो उस प्लेयर को भी देखेगा जो एक अच्छे शॉट को क्रिएट करवा रहा है। तो वो सारी चीजें, हम्म, सिर्फ बॉल को मतलब स्कोर करना ही बास्केटबॉल नहीं है। बास्केटबॉल के बहुत ज्यादा पैरामीटर्स हैं, बहुत वास्ट वो है गेम। सिर्फ स्कोरिंग का ये है कि स्कोरिंग पे गेम हारे और स्कोरिंग के बेसिस पे गेम हारे और जीते जाते हैं, लेकिन स्कोर करने के पीछे कितनी स्टेजेस होती हैं वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक स्क्रीन एंड रोल, सारी चीजें जो प्ले है, अगर आप अपने प्लेयर को जो जैसे आप गोल्डन स्टेट को देखते हो, गोल्डन स्टेट के जो टीम है उसमें बाकी 4 प्लेयर्स मतलब क्ले थॉमसन और करी को हटा लीजिए आप, बाकी 3 प्लेयर्स उन दोनों को ही फ्री कराने के लिए हैं एक तरीके से, चाहे स्क्रीन में फंसाए या कुछ करें, बिकॉज दे नो कि Right, उनकी शूटिंग परसेंटेजेस बहुत ज्यादा है। सो दैट्स द right, थिंग, right, right. यू आई हैव टू लव बी इट। अ Absolutely. टीम प्लेयर, यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर फॉर बास्केटबॉल। हाँ, It's in the end it's 3 on 3 और 5 on 5. 1 on 1 अभी तक कोई भी लीग इतना पॉपुलर नहीं हुआ है. नहीं, बिकॉज दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। Hmm, मतलब हम इन दोनों स्पोर्ट को मतलब अपने यहाँ इंडिया में नहीं एक स्पोर्ट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर आप ये चीज अगर नोटिस करोगे, दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट, सेम प्लेयर्स खेलते भी नहीं है। correct, 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 correct. हाँ, क्योंकि हम्म, 3 on 3 इज अ वेरी फिजिकल स्पोर्ट, वो एक तरीके से रेसलिंग है कोर्ट के अंदर। हाँ, जो सच बात है, आपको सच बहुत बात है। ज्यादा फिजिकल होना अलाउड है। आप Right, उसमें मतलब पुश ऑफ कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो प्लेयर्स को। वो right. बहुत अलग तरीके का स्पोर्ट आता है, ब्रेक नहीं होता। लाइक वो 10 मिनट स्प्रिंट जो उसको कहते हैं, वो सही में वो 10 मिनट स्प्रिंट है। आपके पास Okay, टाइम नहीं है सांस लेने का भी, आपको लगातार okay. गेम खेलना है, लगातार गेम खेलना है। Right. तो ओके ओके। उसके अलावा लेकिन जो ये है अपना क्या कहते हैं 5 on 5, उसमें वो अलग तरीके का स्पोर्ट है। 5 on 5 के पास ये है, आपके पास बहुत टाइम है गेम को सेटल करने के लिए। अगर आपके पास 30 पॉइंट की लीड भी ऊपर आपके चढ़ गई है तो आप उसको इवेंचुअली गेम में कर सकते हो कवर। 3 on 3 में लीड कवर होती है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, 10 मिनट्स एंड इट्स डन, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। Wow. This तो is उसकी it वजह से suits फाइव it एंड फाइव suits your game ना? I think Abhyuday it suits the physicality I think suits your game in 3x3 या नहीं? हाँ, ट्रू। Very हम्म, interesting. Very interesting. Yeah. बाकी थ्री ओके, सॉरी Yeah. Go सॉरी ahead. Go सॉरी ahead. टू कट, या Please go ahead. बाकी, बाकी 3 on 3. या बाकी 3 on 3 बहुत ज्यादा शूटिंग डिपेंडेंट गेम हो गया है, बिकॉज उसमें वंस एंड टूज की स्कोरिंग है। हाँ टूज जो उसकी वजह से क्या है, अगर आप अंदर से स्कोर करो तो आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, बाहर से करो 2, विच इज लाइक डबल। डबल डबल हाँ, हाँ जबकि राइट 5 on 5 में 2s and 3 की वजह से वो डबल नहीं है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शूटिंग के ऊपर सेंटर्ड गेम हो चुका है इस टाइम पे। Right. लेकिन जो फिजिकलिटी है उसके अंदर वो उस चीज को बैलेंस कर रही है एक तरीके से। So Abhyuday, I have a criticism here about. ओके, I was watching your reels and I was seeing your jump shot. Yeah, why do ओके, you have a set shot? I don't know your jumper. Like when you're या shooting from the three, it feels like you have a set shot. You don't have a one motion shot like Clay or Steph. I नो नो, mean, have you इट्स जस्ट practiced माय, like that or नो नो नो, इट्स जस्ट कि मैं मोस्टली अंदर से मिड रेंज गेम खेल रहा होता हूँ, मैं जंपर्स okay, ही यूज करता हूँ, एंड वो सिंगल मतलब सिंगल मोशन शॉट्स होते हैं। ये okay. जो रील्स में तो मतलब वो हो सकता है कि आप कुछ भी डाल दो, लेकिन show हाँ, show के पहले I was complaining to Gopal. I'm like, yeah, I'm waiting. So the reason is one of the questions I ask most of the players who या end up coming here is ओके, previously I would 5-10 years back I would ask players ki, can you dunk consistently. Now I ओके, ask players ki, how far away from the 3 point line can you shoot consistently. या So तो my मैं question for काफी you दूर is से, that या मैं मतलब जो अपना लोगो वाला सर्किल होता है उससे थोड़ा आगे से कंसिस्टेंटली बॉम्ब के बाद शूटिंग मार सकता हूँ। wow. So रेंज highest है range मेरे which को। we've got Gopal till date yeah and on we should three. have that rule, we should have that rule ना, that big three वाला rule where you get 4 points if you shoot from या the logo. Yeah, वो बहुत है yeah. रेयर नहीं। है वो। थ्री भी हाँ, अगर थ्री भी करे तो वो that will change the full game ना, अगर वो करे तो, हाँ, लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन नहीं करेंगे नहीं, और उनके पास कोर्ट पे इतनी जगह भी नहीं है ना, 3 पॉइंट आर्क के बाद बास्केटबॉल कोर्ट, हाँ हाफ हाफ Correct, कोर्ट में correct, उतना correct, ज्यादा वो correct, नहीं जाएगा। बिग थ्री तो अलग डिफरेंट फॉर्मेट है, उनका तो कोई मतलब नहीं। correct, ये तो फीबा correct, के रूल्स फॉलो करते हैं, तो उसमें इंडल्ज नहीं कर सकते उस चीज okay so correct, correct. I'm going to take it थोड़ा broad, ठीक है, को। ओके, क्योंकि आप you are our first guest by the way from यूपी, तो हमें ओके, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के थोड़े सवाल करने पड़ेंगे। तो एक हम्म, है कि आपको पता है और आप और मैं देखते रहते हैं कि हर नेशनल्स में हर बार पंजाब और तमिलनाडु ये दोनों टीम्स जीतती रहती है, या फिर फाइनल्स में या सेमीफाइनल में तो पहुंचते हैं हर बार। और हम्म, लेटली हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश की टीमें भी आ रही हैं, अब अंडर 18 अंडर 16 में आ रही है। आई थिंक वी वन द अंडर 18 ना इस बार आई थिंक। या अंडर 18। तो आप अगर सिंपली एज अ पॉपुलेशन के बेसिस पे जाएं तो उत्तर प्रदेश को तो हर नेशनल जीतना ही जीतना है ना, क्योंकि अगर नहीं, पॉपुलेशन के बेसिस लेकिन पे देखें तो अगर यूएस का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के मतलब बैलेंस में है। तो ये अगर क्या पॉपुलेशन के उस पे जाओगे आप डेमोग्राफिक की वजह से, तो फिर इंडिया को सारे मेडल ही जीतने चाहिए हर स्पोर्ट में।
हाँ, तो आप यूपी के बारे में बताओ कि यूपी को आप क्या लग रहा है कि क्या रीजन क्या है कि यूपी डोमिनेट नहीं कर रही है, या फिर क्या पॉजिटिव्स क्या आप देख रहे हो कि अब यूपी कैसे इंप्रूव कर रही है बास्केटबॉल? नहीं, जो डोमिनेट करने वाली चीज़ है उसके लिए आपको ग्रास रूट लेवल से प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। जैसे हम्म। आप पंजाब का और तमिलनाडु का देखो, वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल जो प्रॉपर बच्चों को ट्रेन करते हैं शुरुआत से, स्टार्टिंग से। हम्म। जो लुधियाना बास्केटबॉल अकेडमी है, आप वहाँ के प्लेयर्स की क्वालिटी देखो। पंजाब में और क्या है, लुधियाना बास्केटबॉल अकेडमी के अलावा अगर आप देखते हो तो बहुत कम प्लेयर्स आते हैं। लेकिन जो करेक्ट। लुधियाना बास्केटबॉल अकेडमी से प्लेयर्स आते हैं वो अलग एकदम बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स हैं जहाँ से प्लेयर आते हैं, हर जगह से प्लेयर्स अच्छे नहीं आते हैं। तो वो हम्म। चीज़ है। तो यूपी में उस तरीके का कोई सेंटर नहीं है, सबसे पहली चीज़। जो यूपी का पावर हाउस था बास्केटबॉल का, बनारस। तो हम्म। वो कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ से आते थे। इस टाइम पे उतनी क्वालिटी वहाँ की प्लेयर्स की अच्छी नहीं है, लेकिन बनारस वाज़ अ पावर हाउस के विशेष रघुवंशी भी वहीं से हैं और त्रिदीप राय भैया वगैरह सब वहीं से हैं। तो उस टाइम पे यूपी कॉलेज जो है बनारस में, वो एक तरीके से इस तरीके का सेंटर था कि वहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉपर प्रैक्टिस मिलती थी, सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन इस टाइम पे उस तरीके का कोई सेंटर रन नहीं कर रहा। तो इस वजह से थोड़ा क्वालिटी डाउन है प्लेयर्स की। जो दूसरी चीज़ है, वो ये कि एनबीए अकेडमी यूपी में सेटअप है, तो उसकी वजह हाँ। से ये है कि प्लेयर्स अच्छे मिल रहे हैं। बाकी जो आप अंडर 19 वाला कह रहे हैं, अंडर 18 जीतने वाला, तो उसमें आपको भी वो रूल पता है कि क्या हुआ था। तो हाँ, तो तो I'll उस I tell टाइम पे Nikhil. actually I, actually I'll tell Nikhil. I'll tell Nikhil. I'll वो tell yeah, Nikhil क्या the rule. हुआ क्या था? So rule is yeah, Nikhil. So here, this is where it gets. This is all the beauty of policy always comes in. Okay. So there is a domicile rule. Okay. Okay, that because the NBA Academy is situated in Greater Noida, right, which Hmm. falls under Uttar Pradesh. Hmm. So as per the rule, you have to be in a state continuously for a period of 6 months. Okay. Okay, to play for that state. So Okay. what is happening now is because the top players, okay, top talent in India who are like from the age 14 to 18, they're all training in NBA Academy in Noida, right? Right. Which means they can only play for Uttar Pradesh, right? So Okay. you have a situation where you have a super team, okay, an Uttar Pradesh Wow. super team, okay. Wow. And what happened though, but that's not what happened this time. What happened was all these players, say from other states, from Tamil Nadu, Punjab, and all, they were not allowed to play for their states. Okay. Okay, so rather than UP team becoming strong, other teams became weak because their star players could not represent their home states. Wow. Okay, so Okay. that was just a policy decision. But anyway, I think Abhyuday, we all hope that Uttar yeah, Pradesh becomes dominant. क्या yeah, अगर आपके टाइम में NBA Academy होता तो I'm sure you would have your game would have improved by 2x or हाँ, 3x ना? या एनबीए अकेडमी में बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग है। आपको पता है, वो यूएसए वाली स्टाइल की ट्रेनिंग अगर इंडियन प्लेयर्स को आप देंगे तो वो बहुत चेंज कर देती हैं चीजें। तो दे आर लाइक मेकिंग गुड प्लेयर्स। तो एनबीए अकेडमी के प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं जो बाकी इंडिया में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके कंपैरिजन में, एंड दे आर वेरी फिट। उन्हें गेम का सारे प्लेज एंड सब चीजें पता है कि किस तरीके से गेम को रन करना है, स्क्रीन एंड रोल पे बाकी पॉप आउट करना, सारी चीजें उनके लिए क्लियर है बहुत ज्यादा। बिकॉज उनको दिन में दोनों तीनों टाइम वही चीज कराई जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है, मॉनिटर्ड वे में कराई जा रही है, सबसे बड़ी चीज। Hmm. Very Correct. interesting. So Okay. moving on, I have another question for you. So this is Gopal's favorite segment. I don't know why he's asking me to ask this question. So this Okay, segment is called Kicks Ki Kahani. yeah. Abhyuday, can you show us your kicks? Which are your favorite kicks? Which are your dream kicks? Having these one, this is Precision 6 from Nike. Okay. Yeah. Ooh. Wow. Okay. तो हाँ. लो एंकल प्रोफाइल, मैं अब कुछ टाइम से लो एंकल शूज ही यूज कर रहा हूँ। Oh, उससे so पहले have you ever felt कि your ankle has got affected because of that? ऐसे कुछ हुआ है? I've नहीं नहीं always नहीं been ऐसा under think कि should I have high ankle shoes or low ankle shoes? नो। लाइक पहले जब छोटे थे तो ये सोचते थे कि हाँ हाई एंकल शूज पहनेंगे, उसको टाइट करके तो एंकल मुड़ने से बचा लेगा वो, लेकिन ऐसा Hmm. नहीं होता। Hmm. लेकिन तो एंड ओवर टाइम के मतलब ये था कि लो एंकल शूज की जो थी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि वो आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा देते हैं। तो Oh, इफ यू आर डूइंग एंकल स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज एंड योर एंकल इज लाइक स्ट्रांग, तो आप लो एंकल right. शूज को यूज करके खेल सकते हो। काफी रेंज ऑफ मोशन आपके लिए अच्छा रहता है So you can एज you can कम्पेयर do टू some हाई very एंकल। good turnarounds and you can do very या good pivots and all of that, Yeah, I'm guessing. yeah, yeah, yeah. That's why most of the forwards they are using these low ankle shoes only. Wow, Okay. Other interesting. shoes. Show us some other. I Yeah, know you have others. nah, I have this one also, GT cut. Yeah, I got these from Mr. Sunny Vandaka from EPBL. Wow. Yeah, Wow, yeah, he gave me these. So these are really nice. The shoe तो is very really आप cool. nice. आप कहाँ से खरीदते हो आप शूज ये, बिकॉज दिस इज अ बिग Like, प्रॉब्लम राइट इंडियन बास्केटबॉल में, लोगों को पता नहीं I कहाँ know, मिलता है. like, so I, by the way, I'm also with like 6'3". I always okay, have a fight bloody finding good shoes. okay. Like,
अब तो फिर भी मतलब बीच में तो बिल्कुल ड्रॉट पड़ गया था इंडिया में बास्केटबॉल, बीच में मतलब लाइक 2 साल पहले बास्केटबॉल शूज आपको मिलते ही नहीं थे इस साइज में, बहुत मुश्किल राइट, था। राइट। लेकिन अब जैसे डीएलएफ वगैरह में नाइकी ने अपना एक डेडिकेटेड स्टोर खोल दिया है, तो उन सब Oops. Oh, we just lost him. Yeah. Sorry, हाँ, नो नो go Abhyuday, ahead. can you just repeat? Can you या just repeat what you said? या Yeah. तो जो अब मतलब डीएलएफ वगैरह ने जो अपने डेडिकेटेड स्टोर्स खोल दिए हैं बास्केटबॉल Right. शूज के लिए, उन पे आपको काफी अच्छी रेंज मिल जाती है और आपको अपने साइजेस मिल जाते हैं। लाइक जो मोस्टली साइजेस लैक करते हैं, आपको कहीं नेट पे भी बहुत कम मिलते हैं ओवर द इंटरनेट, एक यूके 11 12 13 14 तक वहां पे साइजेस अवेलेबल है नोएडा में इस टाइम पे। Very nice. Okay. हाँ, तो आपको मतलब मैं या, एनसीआर के लिए बोलता आपको याद है अभ्युदय when you got your first pair of basketball shoes? हूँ। या आपको याद है कौन सा था वो? हाँ, रीबॉक के बास्केटबॉल शूज थे मेरे पास। Wow. Reebok, मतलब do you remember which one? Was it some player के specific? नो नो, नॉट प्लेयर स्पेसिफिक, एक वाइट कलर के रीबॉक के हाई एंकल शूज थे जो मेरे पहले बास्केटबॉल शूज थे। मेरे Nice. को अभी भी याद है, उस टाइम पे दे वर लाइक अराउंड फॉर 3400। तो उस टाइम के लिए 3400 2008-9 में बहुत ज्यादा होता था Yeah. शूज के It's लिए। quite हाँ, expensive. तो Yeah. या तो वही मेरे पहले बास्केटबॉल शूज थे। उससे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो चप्पल पहन के खेलने जाता था, उसका रनिंग शूज में खेलने चला गया, जो जूते मिल गए मैं पहन के खेलने चला गया था। Yeah, Makes sense. I hope players get sneaker deals. I think अब Indian players को sneaker deal भी होने चाहिए. I think it's time. होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता है उसके लिए, स्नीकर डील्स के लिए। स्नीकर Look, डील्स man, कोई कंपनी sneaker deals के लिए, if there's enough leagues and if there's enough eyeballs, I'm sure या a lot of good brands are gonna come up and end up doing some sneaker But deals. he's doing endorsement ना अभ्युदय, आप तो already I think whey protein के Yeah. हाँ. I हाँ, was showing some लाइक of them. हाँ, कभी कभी मतलब कुछ कंपनीज अप्रोच करती हैं, सो मैं उनके लिए कर देता हूँ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे प्रोटीन So की कर दिया, कुछ actually, चीजें for की कर other दिया। for other Indian players, can you या say some tips on getting some endorsements Yeah. and all of that? लाइक देयर आर नो रियल टिप्स, आपको बस थोड़ा वो है कि इंस्टा पे आपकी एक्टिविटी सही रहनी चाहिए, रीच थोड़ी अकाउंट की आपकी ज्यादा होनी चाहिए, कंपनीज खुद रीच करती हैं। बाकी लाइक मैं कुछ लोगों को ऐसे कुछ जानता हूँ जो इस काम में, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड उस सब में, तो दे गेट मी सम डील्स थ्रू, तो उसके थ्रू आ जाता है मेरे पास। Oh, तो आप interesting. रील्स खुद बनाते हो, आप सारा एडिटिंग आप करते हो? नहीं, मेरा छोटा भाई कर देता अरे भाई से, छोटे भाई से काम कराओ फ्री में. Very cool. Pretty Okay. cool. Yeah. So, Okay. guys, I mean, this is something which I tell a lot of basketball players, any player for that matter. See, the thing is, people are not looking at what you do, what you play, and all. Most brand managers, marketing heads. By the way, my primary business is working with a lot of marketing heads. They end up ओके, focusing on this number only. या द रीच, So if you have a good enough reach, they'll pay you, and at an या average, you like, I'm sure Abhyuday, you have experienced this, like any marketing head is looking at a good reach and for the right target audience. If you have these two metrics, you'll get funds, I'm sure. Like, correct me या if I'm wrong. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अरे मुझे तो मिलते नहीं एकलव्यस पे, ये क्या मतलब, लेकिन आप भी रील्स रील्स बनाओ आप तब रील्स बना. तक। Yeah. So we're working on that. मैं इसके या पीछे पड़ा हुआ हूँ reels के लिए. So हाँ. let's move on Yeah. to our next segment, which is 2-on-1. So आपने Okay. 2-on-3 जीता था, but I doubt Yeah. we'll win 2-on-1 with you. It's a rapid fire round. Okay. So Gopal, let's get started. Be very quick, Abhyuday. One word answers. Don't think Okay. too much. Immediately give your answer. Yeah, okay. Gopal, over to you. But if your answer is interesting, we will ask you a follow-up question. वो तक. Okay, okay, cool. Yeah. तो पहला सवाल, थाईलैंड और इजिप्ट? Egypt. Not Thailand. Next. Not No, no, wait. Thailand. First guy who's not choosing Thailand. Okay. It's his answer, man. What's your problem? Yeah. I'm Aligarh or Delhi? Delhi. okay. Your favorite pre-game music? I like rap music. Eminem. Like Eminem. Nice. Favorite cheat meal? burgers. Okay, hitting game winner or Okay. unfurling the India flag in front of the pyramids of Egypt? Unfurling the Indian flag. That was a great moment, by the way, That's- man. That was Yeah. amazing. So, guys, this I'll have to pause the rapid fire. I want to show this. Yeah, because we need to show this. This is This pretty is cool. amazing. Just one It's second. in- Let me find it. Oh, sorry, it's in reels. Yeah, Yeah, it's in Reels. here. So, What a guys, this is a pretty cool. Abhyuday, can you give us some context on this? Yeah, like जो Red Bull वाले टूर्नामेंट था, तो Mhm. उसके बाद like we were the winners in India. Me, Abhishek, Tyagi, Abhishek Rathi and Samsher.
So this was our first international trip for like all of us, like चारों हम पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे थे, and it was Okay. Egypt जो, and वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक इंडिया से बाहर खेलने का, पहली बार इंडियन टीम को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का. So उसके बाद like अभिषेक was carrying this Indian flag. तो मेरे को, मैंने तो सोचा भी नहीं था लाइक, लेकिन वो कैरी कर रहा था इसको, एंड हम लोगों को मतलब उस दिन लास्ट दिन जिस दिन फाइनल था उस दिन मौका मिला कि इस तरीके से अपनी फोटोज हम वहाँ पे पिरामिड के सामने करवा सकते हैं. एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट था हम लोगों के लिए स्पेशली, सबके लिए भाई, क्योंकि सबके लिए, या हम सबके लिए. हाँ, तो Pretty cool, उस man. टाइम पे या लाइक बहुत अच्छा वो था ये, एक तरीके से जो बैकड्रॉप था वो, मतलब रेडबुल ने जिस तरीके का टूर्नामेंट कराया था कोई और उस तरीके का टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं करा सकता. एक आइडिया है Absolutely. एक्चुअली, आई हैव एन आइडिया. ओके, बिफोर Yeah. निखिल गोस टू नेक्स्ट, अगर Sure. हम ताजमहल के सामने एक 3x3 कोर्ट कंस्ट्रक्ट करें, भाई गजब, वी शुड डू इट ना. बिल्कुल, बहुत ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट होगा वो इंडियन बास्केटबॉल के लिए भी, और वर्ल्ड स्टेज पे इंडियन बास्केटबॉल को एक तरीके से शोकेस करने के लिए. Absolutely. Let's find out who the local MLA is. अभी तो आप खुद पॉलिटिक्स में हो, थोड़ा कनेक्शन है आपके नो पास. नो अरे नो यार. ढूंढते कुछ जुगाड़ निकालते. So let's get back to the rapid fire. Yes. What's one weakness in your game? लाइक स्पीड स्लो है मेरी काफी, नॉट क्विक. Okay, so next, I'm going to change it because you already gave the answer to this. We already know your strength. Your strength is your strength. But my question is, what is your go-to move? द स्पिन मूव, सबको पता है तो. Spin move. Ooh. Yeah. Yeah. Oh, dude, this Like- looked beautiful. I'll just show it. हाँ, on The black tornado, the Shaq spin. yeah, yeah. the spin move. It was ये so तो clean. this is my go to move. बेचारा वो घबरा गया. Defender is like, what the hell happened? Where am I? So yeah, I mean, this is very nice move. So let's move on. 3-on-3 or 5-on-5? 5-on-5. Ooh. LeBron or Jordan? Or Curry? Or Curry. ठीक है. LeBron. Wow. So who's your pick for this year's NBA Finals and NBA champions and NBA MVP? MVPs for me is Nikola Jokic. Like Wow. I like him a lot, that guy. उसका गेम प्ले मेरे को बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो गेम को रन करता है, पूरे फ्लोर को एक तरीके से कमांड में लेके रखता है. उसकी टीम उसकी वजह से अच्छा खेलती है. The whole Right. Nuggets team play good because of him. They perform better when he's on the court. Right. And like I support Lakers, LA Lakers, but I think Phoenix will take it all if they stay healthy. Interesting. Ooh. Interesting. I don't think Because anyone is calling Phoenix. Yeah, because Phoenix is a powerhouse right now. बाकी लोग भले उसको consider नहीं कर रहे हो, like they don't see कि उसमें कौन-कौन इस time पे players खेल रहे हैं. When you're having someone like CP3 who can guide the game, Devin Booker, DeAndre Ayton is a like real good big man, and you have Kevin Durant. If they stay healthy, like I guess they will take it all. Interesting. 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 I mean, just last. So this was the last question of the rapid fire, but we can discuss on Okay. this one particular point because the Yeah. next segment is the NBA segment itself. Okay. So Abhidev, would love your opinion as well as a player. Okay. So the question is this, right? One of the points was why you said that people are not considering Phoenix. I have a counterpoint, which is I feel many teams are scared of Phoenix. Right now, you have Lakers, Clippers, and Warriors, all three contenders who are trying to avoid them in the first round. Yeah, because I told you, like people, I meant like the players and the ones who are playing in NBA, they know that Phoenix is a powerhouse, Right. but players like the guys जिनको मैं जानता हूँ, वो सब लोग Phoenix को इस टाइम पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं पावर हाउस, बिकॉज Right. हम लोग इतना एक तरीके से क्या कहते हैं ना कि स्टारडम से इतना आप ओवरशैडो हो चुके होते हो, लाइक Right. एवरीवन इज वाचिंग कि करी क्या कर रहा है, लेब्रॉन जेम्स क्या कर रहा है, सारी चीजें, यानिस इस टाइम पे क्या कर रहा है. तो Right. उस वजह से हम देखते नहीं है जो टीम इन पर्टिकुलर परफॉर्म कर सकती है. केविन ड्यूरेंट की जब वो एंकल इंजरी हुई अभी, जब वो स्लिप कर गया था कोर्ट पे, उसके बाद फिनिक्स बिल्कुल ऑफ द रेडार है, कोई फिनिक्स के साथ बात नहीं कर रहा. एंड Right. अब वो अगर वापस आया एंड दे स्टे हेल्दी, तो वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छी टीम है वो इस टाइम. Yeah. So since सारी KD चीज is वो है, back, out they of have sight, not out of lost a mind. single game. Since Yeah. KD is back, even today's game, Yeah. the KD Suns, I mean Yeah. the Suns Spurs game, KD didn't play that well. He just scored 18 points, but then the team looked very well balanced. And Yeah. I mean, do you think any other reasons why teams should be scared of the Phoenix Suns? लाइक फिनिक्स सन्स के पास डेप्थ भी है, तो उस वजह से वो खेल जाते हैं. लाइक बेंच स्ट्रेंथ भी है उनके पास Right. अपना
एक तरीके से। लेकिन आप दूसरी चीज ये देखो ना कि आप पे 4 लेजिट सुपरस्टार्स हैं, 4, एक Right. नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेजिट सुपरस्टार। डिआंद्रे एटन को लोग इतना कंसीडर करते हैं, बट ही इज अ वेरी गुड बिग मैन। Yeah, Hmm. yeah, yeah. He does his job या well. Like, doesn't. I mean, it literally took Giannis to go through him. He was able to lock या down on Jokic. Their finals run. He was able to lock या down Jokic. He played really well against Lakers when AD was healthy at that in that playoff या series. They shut out. I think against the Clippers also they played really well. Yeah. Plus, all of us, we talk about the longevity in the game of LeBron James, and we do not see what CP3 is doing. He is also playing consistently for all those years. He came in the Right, league at the same time when LeBron came in, and he's right, also playing good basketball. Like today, in today's days, also he's playing really good basketball. He's commanding the game, and he's like making his team win. right. लेकिन आपको लग रहा है वो इंजर हो जाएंगे प्लेऑफ्स के टाइम पे CP3? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि वो इंजर हो जाएगा, बट मुझे बस ये फील हो रहा है कि अगर वो टीम हेल्दी रही तो वो बहुत एक डीप रन करेगी प्लेऑफ्स में, दे कैन बी द विनर्स। So I have Hmm. one issue with Phoenix. I will add up there, which या is I feel that the team is not deep enough. And once it goes to the second round and third round, it'll be like या this. Anytime their starting lineup is on the court, they'll या be at an advantage. But the या moment the bench comes in, the other team will या pull away. And this has happened a lot. Like last या year, दिस हैज हैपेंड। like 76ers last year, when Joel Embiid and Harden were playing on the court, they were winning. The moment they would या get subbed out, the other teams would destroy their bench. What do you think about that? या ये तो होता है जब आप लाइक व्हेन यू हैविंग 4 लेजेंड सुपरस्टार्स, तो उसकी वजह से आपको अपना एक तरीके से जो वॉलेट है, जो आपका टीम वॉलेट है जिससे आप प्लेयर्स को पे करते हो सारी चीजें, तो Right. उसको कंसीडर करना पड़ता है। तो आप उतना डीप टीम लेके ही नहीं जा सकते हो कि Correct. आपके पास मतलब सुपरस्टार्स को सपोर्ट करने के लिए टीम हो। इसीलिए ये पॉकेट साइज रखा जाता है, वरना तो Right. कोई भी सुपर टीम ऐसी बन के आ जाएगी जो कभी भी खड़ी हो सकती है। हाँ, Right, कहीं right, भी। right. हाँ, जो हुआ लेकिन था केडी और वॉरियर्स के साथ. या लेकिन Right. इस चीज को तो इसी वजह से तो जॉर्डन पूल को इस बार इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसकी वजह से बाकी प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को थोड़े कट शॉर्ट करने पड़े हैं। Exactly, exactly. Yeah. हाँ, Hmm. तो इस चीज को इधर देख के मतलब फिनिक्स के कोच को तो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से एक बार में इन चारों को साथ में कोर्ट पे रखते हैं, या फिर किस तरीके से आप रोटेट करते हो प्लेयर्स को। Exactly. सो इट विल The डिपेंड, वो बेंच it'll have स्ट्रेंथ to थोड़ी be अभी नहीं है उनके वहां पास। पे एक्चुअली वो उस कोच का. So if you think about it, it's actually the coach's problem at this point, you know. या So Phoenix Suns has enough talent and enough players to go all the way. कोच अगर ठीक से संभाल पाया उनके हाँ rotations बस। and all, they हाँ, actually win it all. इस टाइम जो फिनिक्स सन्स के कोच की जो जॉब है वो सबसे टफेस्ट जॉब है कि आपके पास हाँ, हाँ, आपके पास चारों इक्के हैं, लेकिन आपको कब यूज करने, कैसे यूज करने, वो देखना है। Exactly, absolutely. या Hmm. So, Abhyuday, do you have more time? Do you want to stay for our NBA या segment? आई कैन स्टे या अरे सही है, बढ़िया. Superb. Superb. So let's move to. So this was the Spurs Suns game. KD didn't play that well, guys. But that's what Suns pulled away and they won this game comfortably. They Suns have not lost a game since KD has played in their starting lineup. It's crazy. So let's talk about the next game, which Abhyuday, I don't know if you saw this game, but me and Gopal did. This ओके was the Warriors Thunder's game today morning. ओके So very, you know, like in the first three योर वॉइस quarters, इज it felt ब्रेकिंग। like जो Thunder hai, they could not miss a shot. They didn't miss a shot. I think Can unka you just yeah. repeat? Your voice is broke, so that's why I didn't listen. Sorry, I'll just repeat. Yeah, So Gopal and Abhyuday, can you hear me? Yes, yes, we yeah, can. Go yes, ahead. yes, yes. Perfect. So I was saying, so this was a very interesting game. For the first 2.5 quarters, 3 quarters, like Thunder were not missing a single shot. Shea Gilgis Alexander was hitting every shot he was taking. You had some bench players who Williams, who Jay Williams, he was hitting every shot he was taking, and it was crazy. But still, Warriors managed to keep up the pace. So Suns were shooting at 58%. 60% for the first 2.5 quarters. Warriors were still there, right behind them, about Yeah, 7-10 points away. But then the fourth quarter comes. I don't know what flip. I think we lost him, na? Abhyuday? yeah. He's not here. No, no. So I And hey guys, sorry, I think you got disconnected. Can you hear me? Yeah, yes, yes. Go ahead, go yes, ahead. yes, Yeah. yes. So I was saying fourth quarter.
I don't know what switch the Warriors flipped. The Thunder could not find a bucket. They just scored 19. They scored 79 points in the first two quarters, First half, yeah. first half, and in the fourth quarter they just scored 19 points. Like, can you imagine the kind of clamps which Warriors put on them? So this was Yeah. the game, and this was the summary, and this has been the story for the Warriors, where it feels like, they have it in them to just turn on a switch and just get back to their lockdown defense, and that defense just feeds into their offense. They start getting threes, they start getting runaway baskets, they start getting layups, and this was the summary of the game. So Gopal, what did you think? Yeah, Abhyuday, what did you so think? Yeah. so I'll tell you. So about this, right? Obviously, you're talking about the Warriors, but you look at OKC also. They had a game against the Suns, the one Right. before this. Right. Okay, it was similar, where Yes. they were leading for about 2.5, 3 quarters, but Right. then in the fourth, that's the whole comes down to inexperience, right? I'm sure Abhyuday as a player Yeah. also he knows. Like this was my Go point ahead. also. Go यही ahead, मेरा Abhyuday. point था. Like yeah, हाँ, that the teams like Golden State, they are having a lot of experience. Phoenix is also having a lot of experience of playing at this stage, and the players who are playing for these team are like in the league for a very long period of time right now. And Correct. when you compare them to team like the Thunder is having a very young core. Their Right. superstar like Shea Alexander, he's 24 or 25. He's playing Correct. very good, but yeah, he's very inexperienced as compared to other players like Curry, Clay Thompson, and those guys like Draymond Green. And Hmm. so this thing matters a lot in the game of basketball, like because you have to like preserve your fuel for the last 4 5 minutes of the fourth quarter. Right. So it depends on all these things. So Warriors are having a good time with all of these guys playing in, and you can say that fatigue comes in for Thunder. So after Right. that, Warriors had a good way to like finish the game strong, and they won the game. Superb. Hmm. Yeah. And one more thing I want to point out here, Gopal, before you say one thing. Okay, Jordan Poole, first three quarters, I was हाँ, like, why the hell is this guy on the floor? He's, अरे ये बंदा 4-5 foot behind the 3 point line, behind 3 point line near the logo. He's just pulling up, and he's missing horribly. hmm. And but he's continuing to shoot. I'm like, yaar, roko ise koi. And then fourth quarter comes and he bloody can't miss. हाँ. I'm like, ये क्या चल क्या Shooters रहा है? shoot, shooters shoot. Absolutely. No, he's Okay. had amazing fourth quarters, right? Last 10 games, I think he's had some incredible fourth quarters, right? He's Yeah. averaging So 14 points in every fourth quarter or something. exactly. So he's not like for the last if you think about it, for the last 8 4 quarters, he's the league leader in scoring. He scored in like last 6 or 8 fourth quarters alone. He scored like almost 100 points. Oh, that's So very he's impressive. averaging like 12 to 15 points in just the fourth quarter. It's crazy. It almost feels like there was one specific moment in the game where Jordan Poole had taken over and he was hitting every basket and Warriors were feeding him. But the score was 115 and 115, right? हाँ. And it's still like, they have not pulled away still, and it's 115, 115. And Steph Curry walks down. He gets Luke Dort, who is like one of the best defenders in the league at the guard position. Luke Dort actually, Abhyuday, when I was watching your reels, I was telling Yeah. Gopal he has Yeah. a physique like Luke Dort. So anyway, he's a tough, very Yeah, tough he's very tough, defender, very very physical. Yeah. strong, very physical. And Steph Curry just looks him down, takes a step back, shoots a three, and just I feel that moment just broke the Thunder because they couldn't get a basket for the next 5 possessions. So it हाँ. was intense. Like that particular shot just took it. Yeah, No, Gopal, you I were saying have something. I have a question. Okay, it stems from this. It stems from the Warriors, and this is a question about Indian basketball. This is something Nikhil has asked me. Abhyuday, इंडिया में ऐसे लोग तिक्के क्यों नहीं मारते? ये आपने कभी सोचा, मतलब ये डिस्कशन कॉन्वर्सेशन होती है कि हमारे हमारे इंडियन टीम में भी ऐसे शूटर होने, ऑब्वियसली वी हैव जोगिंदर सिंह सहारन जो बहुत ही मतलब नॉकडाउन शूटर है, वो Yeah, पता है, knockdown shooter. लेकिन हम जब भी हम इंडिया खेलते हैं इंटरनेशनली, आपको लगता है कि वी शुड आल्सो बी अडेप्टिंग टू दिस न्यू स्टाइल ऑफ गेम वेयर वी आर स्क्रीनिंग, कटिंग एंड शूटिंग? कि आपकी क्या राय है इस बारे में? यस, मेरे हिसाब से हमें अडेप्ट करना चाहिए इसको, लेकिन जो हम बास्केटबॉल देखते हैं और जहां इंडियन टीम खेलती है, देयर आर एक दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बास्केटबॉल है. एनबीए एक अलग चीज है, फीबा का जो बास्केटबॉल है वो एक बहुत अलग चीज है. तो अगर आप फीबा में अगर इंडियन टीम के प्लेयर्स इस तरीके से आके शॉट फेंकने लगेंगे जैसे स्टीफन करी बैठ रहा है, कोच उन्हें बाहर बैठा देगा. ये सच बात है. लाइक एनबीए जो प्रो लीग का स्पोर्ट है, प्रो लीग एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट की तरह है. आप आईपीएल में वो शॉट्स देखते हो जो आप टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं देखोगे अगर आप क्रिकेट के रेफरेंस में लो. तो सेम Interesting. चीज बास्केटबॉल में भी जाएगी. वही Very चीज कि interesting. अगर आप
इस तरीके के शॉट्स आप लेते रहोगे तो आप इवेंचुअली उस चीज को एक तरीके से, कितना भी अच्छा शॉट, वो अच्छा शॉट इसलिए स्टीफन करी के लिए, जो स्टीव कर बात कहता है उसका कोच, कि वो अच्छा शॉट इसलिए क्योंकि वो स्टेफन करी उस शॉट को ले रहा है, हाँ, जो सच बात सही है। जो बात, अगर राइट। सच कोई बात। बंदा और लेगा तो उसको नहीं उस तरीके से वो करेंगे, तो वही चीज है कि अगर हम लोग उस तरीके के शॉट खुद अटेम्प्ट करने लगेंगे तो राइट। वो जाएंगे भी नहीं शॉट। अगर आप 10 में एक शॉट मार रहे हो तो आप अपनी टीम के 9 शॉट तो खराब कर ही रहे ओके। एब्सोल्युटली। और आपको एब्सोल्युटली। लगता है कि एलीट प्रो लीग जो आपने खेला अभी, हो। उसमें डू यू गेट टू डू मोर हाइलाइट्स, कि आपको ज्यादा डंक्स है या फिर रूल्स में चेंज बदलाव है कि विच अलाउस फॉर मोर ओपन लेन्स, ऐसा कुछ है एलीट प्रो नहीं, बास्केटबॉल? रूल्स में ऐसा कोई चेंज नहीं है। जो कुछ रूल्स, जैसे हमारे में 11 मिनट का क्वार्टर है, लाइक 1 मिनट एक्स्ट्रा जो फीबा वाली टाइमिंग है ओ, उससे, और एनबीए से 1 मिनट कम, या एंड ओ प्लस जो ट्रम्प इंटरेस्टिंग। कार्ड, या जो ट्रम्प कार्ड रूल है, इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, ट्रम्प कार्ड रूल जो है वो एक गेम चेंजर है एलीट प्रो में। हाँ हाँ, तो ट्रम्प व्हाट्स द कार्ड ट्रम्प रूल कार्ड इज, रूल? एक मैच के अंदर किसी भी एक टाइम में, लाइक 2 मिनट्स के लिए आप अपनी एक टीम के प्लेयर को ट्रम्प कार्ड बना सकते हो, एंड उस टाइम के अंदर वो प्लेयर जितने भी शॉट्स मारेगा वो डबल पॉइंट काउंट होंगे। अगर उसने 3 पॉइंटर मारा तो वो 6 पॉइंट्स, ओ अगर, माय या गॉड। अगर फ्री शॉट मारा तो वो 2 पॉइंट, अगर अंदर से ड्राइव या माय कुछ भी रिंग के गॉड। पास मिड रेंज शॉट मारा तो 4 पॉइंट्स। और इसकी वजह से गेम में एंड के जो मतलब एक फाइनल रिजल्ट था उसमें चेंजेस हुए। मतलब एक मैच, हाँ, आई अरे कैन आप यकीन नहीं इमेजिन यार। मानोगे, हाँ। या हम लोगों से ही मैच था बैंगलोर की टीम का, एंड हम लोग काफी लीड पे थे। सो दिस गाय एरन फ्रॉम मुंबई, ही इज अ वेरी गुड ओके। पॉइंट गार्ड। तो उसने 16 पॉइंट मार दिए 2 मिनट के अंदर, इसमें ट्रम्प कार्ड। टी मैक, ट्रेसी मैग्रेडी या लेवल। हाँ, हम लोग वाओ। इवेंचुअली मैच जीत गए क्योंकि अपने पास लीड काफी ज्यादा थी, लेकिन यू जस्ट सी हाउ क्रेजी इज दिस, कि आपने 2 3 पॉइंटर मार दिए और एक अंदर से शॉट मार दिया, एंड कन्वर्टेड 16 पॉइंट्स, वो 16 पॉइंट्स वाओ। बन गए, ट्रांसलेटेड इनटू 16 पॉइंट्स। Wow, this या must have been a very interesting match to watch, dude. या Crazy, crazy, या crazy. लाइक जोगिंदर सिंह आल्सो, ही स्कोर्ड 19 इन 2 मिनट्स अगेंस्ट मुंबई। 19 and या 2 minutes या भाई। अगेंस्ट, या नॉट अगेंस्ट मुंबई, अगेंस्ट चेन्नई, या सो या That's crazy. तो वो Wow. ट्रम्प कार्ड रूल की वजह से काफी I'm, चीजें I'm चेंज just हुई। imagining Clay Thompson or Steph Curry with the trump card अरे, rule. या Game Clay खत्म वहीं पे. Clay Thompson didn't even play in this game, right? Coming back to this game, Yeah, yeah, they, yeah. they Clay were Thompson without didn't. Clay. Yeah, they Yeah, were without Clay Thompson and they were without Wiggins. That's the scary part. Wiggins was in the stadium though. Yeah, yeah, लकी Wiggins was in चार्म। the stadium. See, people are looking at Suns, people are looking at Lakers. Both are amazing teams who have a great potential to win it all. But I still have my bets on the Warriors ओके, वेल, because the continuity makes a नहीं नहीं, difference. कितने का बेट कर रहे हो आप अभी उधर से कर लो बेट, 500 का, 1000, 5000। इलीगल है यार बेटिंग इंडिया में। हाँ अरे, जेल में पड़ जाएगा। एनबीए बेटिंग तो ठीक है, एनबीए कौन अब देखता है? आईपीएल में मत करो बेटिंग, एनबीए का करो। कोई नहीं। आईपीएल में, बल्कि आईपीएल में करो, अब तो खुल के सारे प्लेयर्स आके ऐड कर रहे हैं कि बैटिंग करो, बैटिंग करो। नहीं, वो करेक्ट, फैंटेसी है ना, वो हाँ फैंटेसी हो गया। फैंटेसी, हाँ वो एक तरीके थोड़ा से फैंटेसी हो गई, हाँ है वही। आप वही वाली चीज है कि वो पर्दा लगा के सेम चीज बेच रहे exactly, हो। exactly. So that's a different discussion altogether. So हाँ, coming back, I mean, Abhyuday, why do you think Warriors will not win it all? Because your pick was the हम्म, Suns. या Because they मेरे को have सन्स Wiggins की, back. हाँ मेरे को पता है, जो लास्ट ईयर वॉरियर्स ने चैंपियनशिप जीती, वो Hmm, उस टाइम पे मतलब मैं वॉरियर्स, हाँ मेरे को अच्छी लगती थी, स्टेफन करी भी मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन हाँ लास्ट ईयर जो उन लोगों ने चैंपियनशिप जीती अगेंस्ट ऑल ऑड्स, correct. तो उसने मतलब वो करेक्टर शो किया उस टीम ने कि क्या करेक्टर चाहिए आपको चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो आई Right. लाइक वॉरियर्स अ लॉट, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि एज अ सुपरस्टार टीम, मतलब अगर आप स्टार टीम को देखोगे तो सन्स, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट वो उस वजह से है कि मेरे को CP3 भी काफी ज्यादा पसंद है। Right. हाँ, हाँ एंड डेविन बुकर इज अ गुड प्लेयर, तो व्हाट वो अबाउट उनके द पास। ईस्ट? व्हाट अबाउट द ईस्ट? ईस्ट में कोई नहीं ईस्ट आपके? में Miami, they play like dogs. मायामी, Miami, yeah, मायामी, Yeah, Miami. many If they, people say they are the dark horse in the East. You know, they can actually win yeah, it. Yeah. Miami, yeah. So let's move on to the next game, which was the हाँ, Lakers Jazz game. यहाँ we had a vintage performance by LeBron James. LeBron James, 37 points. Yeah, I know, and they had the game in the bag actually. Like they were, it was not supposed to go to overtime. They Overtime, had yeah. a good lead, but Jazz made a comeback. Now Hmm. Jazz, of course, एक rebuilding team है. तो ये particular game में, you could see that despite having Anthony Davis and LeBron James, the problem with this team has always been inconsistency. Yeah, Like sometimes when they have a bad game, they have horribly bad games. Wherein a team which is rebuilding, which is tanking for the first pick in the draft, they were yeah. able to give Lakers such a hard time. Hard time today, taking the game Yeah. to the overtime, yeah.
Exactly. And plus, Anthony Davis didn't play well at all today. And that's one big problem with him, wherein one game he can give you 40, and the next game he'll just get you 12. And Yeah. what he got today, 18. So Yeah, 18 it's points. so I mean, this was very interesting game to watch. But this gives you a good glimpse कि यार deep अगर playoffs में अगर चले गए and Mhm. सही matchup अगर मिल गया तो a team can. So this game actually made the Lakers look beatable because Yeah. last 5-6 game में they were looking unbeatable. लाइक वी ऑल नो कि वो बीटेबल है, तभी वो 6 7 8 प्लेस के लिए की लड़ाई में है, वरना वो टॉप पे होते। There's no Absolutely team जो अनबीटेबल लाइक जो जैसे वो अनडिफिटेबल हो, लेकिन हाँ, ये थोड़ा-सा एक तरीके से आपको एक्सपोज़ करते हैं इस तरीके के गेम्स, आपकी correct. वीकनेसेस को कि Exactly. लाइक अब तो सारी चीज़ें टेप पर हैं। लाइक जो भी टीम आपके खिलाफ खेलने आएगी, वो टेप देखेगी आपका कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो। So एक हुँ, एग्जांपल देख सकते हो आप अभ्युदय as a player, as a professional player, when you see the या, tape, right? What do you या। look at, and how Hmm. reading the tape can give you openings to like teams mistakes? या अगर आप टेप देख रहे हो, सो यू कैन लाइक फिगर आउट व्हाट आर द प्लेज, लाइक एवरी टीम हैज सम लाइक 5 टू 10 प्लेज दैट रन ड्यूरिंग द गेम। Okay. Okay. Hmm. So after watching the tape, you can know at which time they're running which play, or what, like sometimes players use some like a motion or something to like tell other players that this play would be conducted at this time, Okay. like punching, like making a punch in the air, or like calling 1 2 3, anything like that. Okay. Yeah. So Huh. you have to read through the tape that at what time, what play, like which play they do play, and you have to like improvise accordingly. तो आप देखते हो अभ्युदय, आप यू एक्चुअली वॉच मैचेस ऑफ अदर टीम्स इन लो 3BL और EPPL, ऐसे आप या करते हो ऐसे? या समटाइम्स वी डू एज अ टीम। Wow. हम लोग मतलब इतना ज्यादा नहीं करते जितना करना चाहिए, लेकिन हाँ, जितना बाकी लोग नहीं करते उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं। लाइक हाँ. मेरे को मेरे को बास्केटबॉल देखना काफी ज्यादा पसंद है। Makes sense यार. It's a या great fun sport to watch. Especially अगर वो है तो you must love watching motion offenses like the Warriors या जहाँ पे या randomly backcuts होके open हाँ, dunks मिलते हैं लोगों को. सबसे बड़ी चीज वॉरियर्स के जो बैक कट्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि वो बैक कट्स मतलब रिंग के पास फिनिश हो। स्टेफन करी और क्ले थॉमसन जैसे लोग बैक कट करके अदर साइड पे वहां अदर जाके कॉर्नर, थ्री, हाँ. हाँ, अदर कॉर्नर से 3 पॉइंटर्स रैंड लगते हैं, और उस टाइम पे वो थ्री बहुत ज्यादा फ्री होता है। कोई इतना डीप बैक को मतलब बैक कट के लिए वो करता ही नहीं है इम्प्रोवाइज के वहां तक प्लेयर जाके वहां से 3 अटेम्प्ट लेगा। हाँ. Absolutely. एक्चुअली मेरा सवाल है, एंड दिस गोज इनटू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लेकर्स जैज. ओके, Right. लेब्रॉन स्कोर्ड 37 पॉइंट्स. अभ्युदय, आई वांट यू टू गिव अ पर्सपेक्टिव एज अ प्लेयर या कि हाउ क्रेजी इज इट दैट अ guy of his age is able to put up such performances. Like, can you just He's explain to 40, man. He's fucking 40. 40 तो How नहीं है is यार, he 40 doing? नहीं है वो, He's 38 39. 39 है. 40, yeah, 39. अभी next या 40 हो गया है अभी. हाँ, नो ही विल टर्न 40 लाइक इन दिसंबर, आई गेस इन exactly. दिसंबर। या हाँ, तो अभी they सो just tell us ना, as a player, how difficult no is it to because do what he's doing? No, because he's very dedicated to his physique and to the game. Like he's in perfectly good shape. So he's playing. Like you can also see players like Joginder Singh Saran and Prakash Mishra who are Indian players, and they're like around 40, and Prakash Bhai is like more than 40. Yeah, and he's Hmm. playing competitively. So it's like इसे कहते हैं ना जो player की भूख है एक तरीके से. So it's your hunger. So LeBron is having that hunger and he's playing. Vince Carter was 43 when he was playing in the NBA. He was not a superstar player at that time, but he was Right, playing and dunking the ball over younger players. right. Hmm. But one thing about LeBron, I must say, even now you can very clearly tell he's a top 10 player in the league. And Yeah, that is true. just surprising. Like being a top 10 player in the league all basically means he's top 10 player in the world at the Yeah, age for of 40. like yeah, for a 40-year-old guy, and like he's at that spot for like 20 years now. Exactly. It's insane, man. Yeah, He is. So this is one argument which a lot of people make ki why LeBron is the GOAT over Jordan or anyone else. It's like yeah, how long he's been at the top. It's ridiculous. and he's not slowing down. Yeah. He's So you not can slowing clearly down. tell, Yeah, apart from some of the injuries, when he's yeah, playing, he's killing it. Like yeah. He's killing it. he was a leader in the MVP race in the beginning of the season. Yeah, he missed a So few games and all those things, but right. he's playing good. Whenever he's on the court, the team is playing a lot of like a lot different than when he's not here. And Hmm. I have a very nice quote from Draymond. Going up against LeBron in the playoffs, you can't shut him down. Yeah, Like yeah, beating a team with LeBron on their side 4 times is a very difficult task. yeah. True. So it'll be very interesting to see. LeBron and possibly AD, right? AD if he's fit. And this again is a question I want to ask a player. अभ्युदय, आपकी कभी इंजरी हुई है एंकल में?
how difficult is it to come back from an ankle or leg injury, right? ऐसा And कुछ the second It's part is, why the hell does Anthony Davis keep having the same damn ankle हाँ, injuries? क्या वो क्या करता है? कंडीशनिंग से सही नहीं करता क्या? मतलब क्या कर हाउ वुड आई नो दैट, लेकिन हाँ, इंजरीज अ पार्ट ऑफ गेम है। मेरे भी हुआ है, बाकी लोगों की। मैंने तो आपको बताया था, मेरी एक सर्जरी भी, मतलब मेनिस्कस टीयर की मेरी घुटने की सर्जरी भी हो चुकी है, नी सर्जरी एक बार। Right. हुँ, हाँ, तो लेकिन अगर आप पहले के वो पढ़ोगे स्टेफन करी के बारे में, तो बिफोर लाइक ही टर्न 25 से पहले उसके एंकल्स बहुत मतलब एक खराब स्थिति, मतलब सिचुएशन में थे। आपने पढ़ा होगा मोस्ट, क्योंकि यस, सब यस। अवेयर है उस चीज से। Right. लेकिन उसके बाद जब स्टेफन करी ने लाइक अपने एक तरीके से ट्रेनिंग करी, एंड उसने सारा जो वेट मैनेजमेंट था अपनी बॉडी का, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जिस तरीके से वो यूज कर रहा है सेंटर ऑफ मास अपना, वो अपने ग्लूट्स के ऊपर फोकस किया, एंड एंकल्स की मोबिलिटी के साथ साथ ग्लूट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। तो उसके बाद हुँ, उसकी इंजरीज बिल्कुल कम हो गई, जबकि उस टाइम पे स्टेफन करी के एंकल्स के लिए कहा जाता था कि ये बिल्कुल खराब सिचुएशन में है, लाइक ही वोंट बी एबल टू प्ले एट दिस लेवल फॉर अ Correct. हुँ, लॉन्गर टाइम, बट ही And इज प्लेइंग। सो absolutely. और उन्होंने एक और चीज किया था, which I feel he does even now, is when he takes a very high jump from a layup or a three, he या falls on his bum. Have you observed that? नो नो, So दिस आई previously, हैवंट सीन दिस। so या this was actually a breakdown. A very nice YouTube channel broke it down. ओके। A doctor, he was like, he's landing, for whatever reason, he's not landing on his ankles when he takes a high jump, or when he takes a, when a contact fall, he falls on his glutes, as you said. And because the glutes are a much stronger muscle, and his ankles are weak, he's been able to या take a lot of hits. In fact, many people say that, Zion Williams should learn how to land and how to fall. uh, Zion Williamson is very heavy to fall like that. let's see. But Yeah. yeah, so let's move to the next section and the final section of the show, guys, which is the conference standings. So Abhyuday, how, like, this is what how's the conference standing look right now? Yeah. Mavs, I cannot believe that they are out of the play. sorry. Potentially, yeah. That's just sad. I Like, don't know why I'm laughing, but it's sorry. I Yeah. apologize. Sorry to Mavs fans. लाइक जो कायरी के हिटर्स है ना, उनके लिए एक और वो मिल गया, उन्हें एड ऑन पॉइंट मिल गया हाँ, कि अर्विंग डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। Ari, I am a Kyrie. I love his game, but I hate everything else about Kyrie. And this is just proof that in the या Celtics, he should have led them to a championship. He couldn't. With the या Mavs, with the player like Luka Doncic, who's या basically LeBron James. Like, Luka Doncic, although his game is a little bit more skilled, his impact on the court is like LeBron James, या and ही he's इज not वेरी able. स्किल्ड, या ही इज वेरी Yeah, स्किल्ड। yeah. So I can't believe that, but they still have a chance that if they win their next game and the Thunder lose their next game, they can actually make the play-in. And you never या know, play-in में कुछ भी हो सकता है. They end up, या getting into कुछ the भी हो सकता है। playoffs. या The next part is on the East. So Abhyuday, whom do you have winning the East? आई विल सपोर्ट मायमी इटसेल्फ। या बट आई नो Interesting. दैट मायमी तो 7th पे है अभी। No, I know, but they've been making a very good late season push. Jimmy हाँ, Butler is या healthy. जिमी He's बटलर killing it हेल्दी right है, now. या प्लस एडिबायो, बैम एडिबायो, मुझे वो Yeah. प्लेयर बहुत पसंद है। ही इज अ Oh, वेरी हम्म, okay. गुड प्लेयर, और लाइक ही प्लेज वेल अगेंस्ट प्लेयर्स लाइक यानिस आल्सो, Wow. सो हम्म, दैट्स व्हाई। बाकी बक्स इंटरेस्टिंग। तो एक पावर हाउस है, यू कैन ऑलवेज सी दैट, बट लेट्स सी क्या होता है, बट भाई, आई विल रूट फॉर मायमी। या I just noticed New York Knicks are 5th. I'm या Yeah, yeah, shocked. yeah. दे Great हैव भाई for the कैसे league. कैसे हुए वेरी भाई? गुड सीजन। या They're अरे having a very good season. And Knicks जूलियस Cavs, रेंडल, yeah, Julius Randle and dude ब्रंसन, Jalen या Brunson जेलन ब्रंसन, ही इज is प्लेइंग आउट ऑफ हिज killing माइंड। it. या 48 points the previous game. I don't know how या much he. I don't know if he had the a game today. He is killing it. He has been a scoring machine. The Cavs Knicks series is going to be lit because they are like Hmm. very well balanced teams. I don't think Cavs or Knicks can make a deep playoff push, but that one series is going to be good because both are very young teams and they are going to beat each other up. मेरे को या तो लगता है. एंड डोनोवन मिचेल इज आल्सो प्लेइंग गुड, सो दैट्स व्हाई। Yeah, exactly. So, guys, that's all for today. Abhyuday, thank you so much for joining and थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या staying with us while we finished our NBA segment as well. या So, guys, you have to check out Abhyuday. Follow him on Instagram. Uh, he plays in the 3BL League and the Elite Pro Basketball League. Abhyuday, I'm guessing you share updates on your Instagram as and when the या dates come out, right? या So, आई विल। so please follow Abhyuday on Instagram. Very interesting player to follow. Very interesting game and a very physical, domineering presence. Abhyuday, Yes, sir. thank you so much for joining us.
You're welcome. Thank you for having me. Yeah. So, Wow, that was uh, amazing. That yeah, was that was amazing. a really. We had a guest, and we could get a professional basketball player's perspective on, how they look at the NBA, and very interesting to hear. Yeah, Uh, I have one point though. Okay, Go ahead. you were mentioning about Steph Curry landing on his glutes, right, Right. or his butt. By India में cement court पे अगर if you try doing that, you you will not have butts left. There'll be no ifs and Oh buts. wow. Okay. Actually speaking, there's a very strict no-no against playing on concrete courts, in the NBA and all of that. क्या actual rule है क्या वैसे? I would Not a not. rule in contracts of some NBA players. It's clearly mentioned they shouldn't be playing on concrete courts. And the reason Hmm. they put this rule was because in 1980s, Larry Bird, right, a legend of the game. So one is he ruined his back, but he would also play a lot on concrete, and that screwed up his back's recovery. Ooh, Larry Bird is also a victim of concrete courts. I didn't know that. Yeah, it's very sad. It can Hmm. fuck up your back. It can screw up your legs, your knees. It's very, very intense. And I don't know. I mean, if you can find a facility where you have wooden courts, please play on that, or at least the synthetic material courts, but not concrete courts, because it can really screw up your. Uh, it can really screw up your back and all of that. Even from the gameplay perspective, yeah, Nikhil, if you look at all these highlight reels and them, attacking the paint and Right. driving, it's honestly you can't do it in India. It's a stupid move to do because you just get injured, man. I've seen in Kantirva Stadium, by the way, one guy, and I've Right. actually saw his sort of knee go backwards like this. I'm Oh like, man, that was that's that's horrible. crazy. Yeah. Yeah. In fact, I personally stopped playing basketball regularly because I used to repeatedly injure myself. Like I have ligament tear in my ankle, ligament tear in my knee, वो and तो I have my doubts about your warm up and cool down and your stretching and no, वो आप I कर रहे would, थे अच्छे dude, से I कर would रहे do थे सब. all of that. I'll tell you हाँ. what the problem is. Okay, I have that Zion problem. I'm a heavy guy. Zai. You were not always heavy, na. तो No, अब dude, I was a lot heavier before. I'm not joking. And the really, crazy part is, for whatever reason, like, I could almost, I could dunk at that weight. really, Yeah, ये so footage निकालना पड़ेगा भाई no, कहीं there's से. no footage. There was like 18, 19-year-old at that time. But I was heavy as hell. So I would, run around and jump. And when you're in the heat of the game, you're going for a block or a rebound, you don't care, right? Hmm. So I would do that, and I tore a ligament in my ankle, had an ACL tear in my knee, and I was like, "Fuck it, man, abhi band karna padega," because it was affecting other aspects of life. So, That's the life of a Desi baller. so guys, on that note, a very exciting show. See you guys next on Friday. Yes, peace.